मिस आप म्यूट हो। Audible now? यस मिस। कि आगे का खाली रख के पीछे भर के मतलब क्या? पेशेंट में खाली पीछे बैठने का क्या? आए नहीं है। हाँ। और फिर मिसिंग भी लग रहे हैं मेरे को। Okay. So we have completed chapter number 2 last time, right? 3. So 1, 2, 3, we chapters are done. Now we are supposed to start with chapter number 4. Fifth chapter will not be taken by me as I have told you, right? So fourth we will be taking. Fifth will be taken by ma'am. So once we are done with this, then we can switch on to physics. I mean the physics topic which is there. And then 5 chapters probably for your semester portion will be done. That first 5 ही रहेगा, yes. So only this is left now. Fine. So let us start with our chapter number 4, environmental management. Now, according to me, this chapter is completely interactive session wala chapter. Means a few things you know, few things I know. When we discuss few of the things, then it'll be like okay, like few of the terms which we'll be studying. Many of you might be knowing the terms earlier, and a few terms which will be new to us that we are going to study. Okay, fine. So, what do you understand by the term called as environmental management? Like anything that pops up to your mind. Yes. Protecting environment. Protecting environment. Okay. Anything else? Taking care of it. इधर किसी को कुछ आता नहीं है क्या? Try तो करो. Taking care of environment. Taking care. Okay. Second last bench wants to go out, then can go. मतलब मणि सर बाहर ही बैठे, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाके एक सर के साथ ट्रिप मार के आ सकते हो. वहां से आने के बाद बैठने लायक रहेगा कि नहीं वो मैं नहीं जानती, बट देन तो ट्रिप मार के आ सकते. This person come over here in the first bench. The one sitting adjacent to that person. Come. I am not giving you a choice. I am telling you to come here. It's a command. It's an order. Come in. He was talking to you. You come over here. मेरे पास टाइम पास करने के बिल्कुल भी है ही नहीं, टाइम ही नहीं है अपने पास. I am just saying you to come over here. Keep your bag there if you want. Take your textbook and sit over here. Simple. Very good. Why? Why are you not getting it? Have you lost it? Why? Where is it? No idea. बोर्ड का एग्जाम्स है, पढ़ना है और टेक्स्ट बुक की जगह पता नहीं. वेरी गुड. तुमच्याकडे पण एकच आहे. You don't have it right now, na? हाँ, that is what is my question. उसके पास ही रहेंगे, वो ऐसे ही आ जाएगा. ये लेक्चर है, उसमें तुम लोग ऐसा करते हो. बस everybody has.
सीरियस बिल्कुल नहीं है। प्रसाद मिलेगा इम्पोजिशन। ओके, तो आज जो भी पढ़ाऊंगी व्हाटएवर इट मे बी, कल से अगर आगे के 2 बेंच खाली रहेंगे और पीछे का 2 बेंच ऑक्यूपाइड रहेगा, वो दोनों उधर के लोग को इम्पोजिशन देंगे, आगे का बेंच खाली नहीं चाहिए। सर ask them but they are saying that these people have not come or something, I don't know what it is. तो फिर क्या करने का रहता है, पीछे जाने का रहता है। नहीं जो आगे पीछे आया कौन लोग? ये If you see it as vacant तो occupy कर लो ना। लेक्चर होने के बाद में सब शिफ्ट हो जाएंगे आगे। देखती हूँ पोजीशन बदल ले। Hardly 3 lectures you have, you know that बिना textbook के, textbook is your God, remember this. ये चीज मैं हर साल हर बच्चों को बोलती हूँ. It will be state, CBSE, ICC, whatever. The textbook. Mean when I take out papers, I don't refer to any kind of digest, nothing. I take out whatever the MCQ questions, whatever it is, from the textbook only, because textbook has that content. On boards, यही सब फॉलो होगा, इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू नो दैट. वहां से कुछ आता है क्या तुम लोग को? So what the main thing is your textbook only. वो तुम्हारे लिए रहता है, मैं तो बिना टेक्स्ट बुक के टॉपिक देख के भी पढ़ा दूंगी, but that is for your reference. Today is the last warning to both of you. Okay. Fine. So yes, online children have given me the answer for environment management, right? Anybody else from here who wants to give me some kind of definition of their own or explanation on environment management? To preserve. Okay, but why there is a need to preserve? That is the first point over here. So basically the chapter has been divided itself into 2 parts. वैसे तो बहुत सारे उसमें सब टॉपिक्स दिए, but actually in 2 parts. First thing is that environment. So you have to know what is environment. What are the biotic, abiotic factors? What is an ecosystem? Okay, so all an ecosystem, this you have already studied in your 8th standard. Ecosystems नाम का chapter था, chapter number 18 कुछ रहेगा, not number पे हो सकता है. Ecosystems करके you would have studied in your 8th standard. 9th में हमने एक chapter पढ़ा था. Again, environmental management. Chapter number 9 मेरे हिसाब से. 8 is harmful, so 9 is environment management. So उसमें जो पढ़ा था उसी का continuation we are going to see over here in this chapter. I hope it is clear. Are you understanding? Fine. Starting with the chapter has been divided into 2 parts: environment and management. Something we are facing, few of the problems we are facing, and that is the reason we are shifting towards the management. मतलब कुछ जब मुझे समझ में आता है कि मेरा एग्जाम्स है बट मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो I need to manage my time. The moment I make a timetable, making is not everything, huh? So the moment I make a timetable, I start abiding it, following it, and after that I could see the changes in me as well as in my academics. So managing a thing. So before coming to the management, we have to know what are the factors of environment, what are the problems those are caused. इसकी वजह से environment manage करने की जरूरत है. Now many of the topics which are given over there are the general topics. Like maybe you must have read about it earlier also. You must be knowing about them earlier. Okay, fine. The first thing I can see on the page is regarding your 2 important words, that is food chain and food web. Anybody who can give me the difference between both? Anybody who can give me the difference between both food chain and food web? Yes. Food chain जो भी पता है तो at least food chain के बारे में बताओ. At least if you know about food chain.
Frame a sentence. Okay. Example. Okay. कौन किसको खाता है? ग्रासहॉपर स्नेक को खाता है, इसलिए ग्रासहॉपर को खाता है, वो पता होना चाहिए ना, उल्टा साइकिल नहीं जाना चाहिए, so you should know. स्नेक ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर से स्टार्टिंग है, स्नेक ग्रास को पहले ग्रासहॉपर, फिर स्नेक को eagles या vultures, right? Those are the highest trophic level का organisms are those. मतलब eagle, vultures and yes, eagles, vultures, इनको कोई भी अटैक करके कंज्यूम नहीं कर सकता है, so they get decomposed by the help of the microorganisms. यही सब पढ़ा है ना लास्ट ईयर, याद तो नहीं रहेगा, याद दिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ. So food chain and food web. Food chain is what Jhalak has told us, right? You have ample of examples. You have different types of food chains. Parasitic, thank you. Parasitic food chain. Then you have saprophytic food chain. You have different types of food chains which are present. Food web में क्या होगा? On a single organism, many of the different organisms will be dependent on that. For example, deer. Deer is the prey. Prey मतलब prey. So उसके ऊपर dependent है lion. Yes. Tiger. Yes. Leopard जो भी बेचारे नहीं है, but then yes. Cheetah मतलब जो भी even crocodiles can any of the time can snatch the deers and giraffes. So this is called as a food web. When you have it, it forms a network, it forms a web where you have many organisms depending on a single organism as their food. So this is what we have already studied in our last year 9th standard. Okay, fine. Okay. So now ecosystem. What do you understand by the word ecosystem, in which you have two types of factors called as abiotic factors and biotic factors? Yes. What do you understand by the two words abiotic factors and biotic factors? वहां पे मत देखो, अपना दिमाग चलाओ. Abiotic, biotic. Biotic living, abiotic non-living. Okay, examples. Plants non-living है, ये मुझे 2021 में समझ में आ रहा है. तो वो भी biotic. तो plants हो गया ना यहाँ पे, plants और right. Air, good. Water, soil, Breathing बोलते हैं. sunlight, Sunlight. sunlight, Right. ठीक. So abiotic, air, water, sunlight, wind, air, all comes in that. Biotic, plants and animals. Now my question to you people is, how you remember this thing? बहुत लोग confuse होते होंगे ना? नहीं. देख के लगता तो नहीं, आंसर तो कोई भी नहीं कर रहा था. How you remember? Biotic मतलब living. Simple. Abiotic, non-living. Abio, इतना भी याद रखेंगे. Okay, fine. Now, there the next thing they have told you is about now few of the terms. So I would like to ask this to many of the people who are sitting here. So last bench corner girl can answer me. What do you understand by the term autotrophs? एसी चालू है क्या? बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ. What do you understand by the word autotrophs? ये सब 9th में पढ़ चुके हो. can produce its own food.
हाँ बेटा झलक another okay another organisms for food बसा वेरी गुड किसी और को आता था कि नहीं autotrophs are the organisms the one who are going to prepare their own food and पूरे universe में it is only plants who can do that because others including animals humans everybody others are termed as consumers we consume plants right so we are consumers उसमें primary consumer secondary consumer tertiary consumer कहाँ से आएगा ये सब कुछ primary secondary in the food chain okay so just let's have a look on that grass eaten by frog frog eaten by snake snake eaten by the vulture and nobody is going to kill the vulture so vulture is going to get decomposed and all the you can say the carbohydrate proteins whatever the inorganic substances organic everything is going to get decomposed back into the soil and then जैसे वो soil में जाएगा तो obviously it is going to behave like a nutrient for the plants and again you have the next plants growing over there. I hope it is understood. Now the moment I say who is the primary producer over here primary producer ये word ही wrong है producer कौन है basically plants who is the primary consumer secondary consumer third consumer so third के बदले में we can say tertiary consumer are you understanding everybody is going to take their 9th standard textbook at home today tomorrow before my next lecture and are going to read about the food chain and food web at least once energy flow in an ecosystem that's all वो पढ़े बिना अगर कोई आता है ना नेक्स्ट लेक्चर तो आओ ही मत बेस्ट because the same things are going to get repeated over here बार-बार मुझे वही चीजें वापस बोलनी पड़ेगी so that doesn't make sense are you understanding okay so I hope it is clear till here the terms given over there fine relationship between the environment and ecosystem let's see yes last bench can you read loudly relationship between environment and ecosystem relationship between environment physical, chemical and biological factors affecting the living organisms in very possible is collectively called as environment. In some environment is the condition it includes many varieties of natural and artificial factors. There are two main types of environment. One is natural environment and the other is artificial. okay so what do you understand by the words natural environment and artificial environment anything which you can try to relate with it natural and artificial अच्छा normally natural artificial का फर्क क्या होता है वो तो बताओ natural is क्या बोल रहे हो natural is naturally present right you don't have to make an environment for that that is already present so example of natural ecosystem जो हमने already पढ़ चुके हैं forest
greenlands, mangroves, marshy areas, all that come, evergreen forest, जो भी है, like different types of forests which we have. So all of those areas come under your natural ecosystem. अब natural में हम सिर्फ land की बात नहीं कर रहे, तो उसमें oceans, rivers वो सब भी आएगा because they are naturally present. Nobody has come over to just make a river over there, right? Artificial is something which we have done. For example, okay, dams, ponds, then regarding the artificial, you have also the sanctuaries which we have made in order to protect the animals, right? Then national park फिर भी naturally ही होता है मेरे हिसाब से, तो वो एक it's a natural ecosystem where just a land is being marked that here national park is bigger, if you know, right? Sanctuaries, zoos तो completely made है, artificial again, right? Then anything else which you can count for the artificial thing? Normal water bodies which we have made, like our swimming pools and everything, that also comes under the artificial only. That we have made for our convenience. I mean, many of the places, like we have visited one place, it was village resort करके उसका नाम था. Where is it? Badlapur, that side, Badlapur, Ambala. I don't remember exactly. So village resort. What do you understand by the name? Village and resort both. तो उन्होंने क्या किया था? नदी वहाँ पे already था. वो नदी के बाजू में उन्होंने वो resort stand up किया. So then they made an artificial pool over there. थोड़ा सा slides and all, तो वहाँ पे pool जैसे बना दिया. Okay, and sort of garden behind that. And यहाँ पे naturally already the river was present. So it happened. Village resort. Understood? Like village का village resort मतलब बहुत आ गया उसमें. The artificial as well as the natural ones both. So वहाँ पे they have made it artificial. Okay, so this is about the natural environment and the artificial environment. Okay. This bicolor zoo which is there, Rani Chi Bagh. Have you seen that? Any one has visited that? Yes, miss. Yes. So penguins देखा है किसी ने वहाँ पे? No. अभी मुझे कुछ पता नहीं है पेंडेमिक से क्या कंडीशन है, but then before that I think 2016-17 में I think some time I have went over there. Twice I went, twice I have seen the penguins. 5 rupees ticket to watch the penguins. And they have made that artificial ये snowy area जैसे polar regions में होता है ना, वैसे artificial उन्होंने वो stalactites, stalagmites and all होते हैं ना, geography के stalactites, stalagmites जैसे होता है, ऊपर नीचे से आते हैं, yes, like that, the snowy area. So sort of they have tried to make that polar region and they have got some 9 या 10 कुछ तो penguins वहाँ से लेके आए. While bringing also they had to make that. That is something which is you're preparing or you're like making an artificial environment. Understanding? तो वैसा उन्होंने वो बनाया था. And then जब मैं गई थी तो वो टाइम पे एक मर चुका because वो बहुत ही young था and he was not able to sustain with our increasing temperature. हम लोग तो कुछ मार्च अप्रैल के टाइम पे गए थे, but then they were alive at that time because उनको external से कुछ लेन देन नहीं है ना, जो उनको artificially बना के दिया था, they were happy in that. What they have to do, what is happening outside. If I am giving, for example, if I am from Antarctica or Arctic region, I need complete cold. तो जहाँ पे मेरा working place है, यहाँ पे full AC है, तो मुझे बाहर का कुछ लेन देन ही नहीं है ना. That is only needed when I go outside. But if I'm traveling in a car which is giving me full AC, then I don't think so I am getting affected by anything. So one एक ऐसा बच्चू मर गया था, I guess, because it was not able to cope up with the rising temperature outside. But बाकी लोग थे अभी कितने हैं I have no idea. But then मैंने देखा था very cute bicolor zoo. मुंबई CST के पहला बीच में और आता है Sanders Road, then you have bicolor. पेंडेमिक के लोगों को इधर से नहीं पूरा ही खराब कर दिया. I understand. 1-1.5 साल से मतलब people will be like वो आता है ना reels कुछ आता है ना after a few months if you go तो सब पूछना पड़ेगा स्टेशन कौन सी साइड पे आता है and all that because people are losing that thing every day when you are traveling. Like I used to travel so
अभी भी अभी अगर भी आई हैव नॉट विजिटेड ना, मैं गई नहीं अभी ना, जब से 2019 एंडिंग उसके बाद आई हैव नॉट वेंट देयर। बट अगर जाते तो बहुत नया लगेगा, भाई गॉड वेयर एम आई गोइंग, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, ऐसा हो जाएगा स्टेशन पे वगैरह जाके, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 2-3 साल के बाद जाओगे तो वो नया ही लगता है। So I hope it is clear regarding the article. If you get chance, then you can visit it. अभी जैसे ये तो हो गया आर्टिफिशियल का एग्जांपल। नेचुरल एनवायरनमेंट का मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ। मैंग्रोव्स के बारे में किसी ने सुना है? लिख के लो, फाइंड आउट करो उसके बारे में, जस्ट एज एन एक्टिविटी। मन है तो लिखो, नहीं है तो मत। पानी में उगने से ज्यादा एक बेटर वर्ड है उसके लिए। व्हाट यू वांट टू से? कहाँ पे? मैन वर्सेस वाइल्ड। पानी में बोलने से अच्छा सॉल्टी वाटर में, मार्शी एरियाज होता है ना, दलदल जिसको बोलते हैं, वो एरियाज में वो ग्रो होते हैं। एंड दे हैव अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब 4 times कार्बन डाइऑक्साइड देन कंपेयर टू अदर प्लांट्स। अपने नॉर्मल प्लांट्स अगर यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंग्रोव्स लगाया है, और अगर पोल्यूशन है या लाइक ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट, सो दिस विल बी टेकिंग, चलो इतना अमाउंट ऑफ CO2 लिया है ग्राम्स के पर पे, दिस विल बी टेकिंग 4 times ऑफ दैट। तो ये x क्वांटिटी है तो ये 4x क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ले रहा है उतना ही ऑक्सीजन भी देगा ऑब्वियसली। सो when we visited mangroves विक्रोली में है, तो where when we had a visit over there, so when we were compulsory था कॉलेज की साइड से, we enjoyed it so much। वहाँ पे मतलब saplings लगाना था, but then it's in marshy area, so you have to take a stick, with the help of that stick you're supposed to go, you have to put that, से नीचे जाके बैठ के नहीं कर सकते, बैठ गए तो गए अंदर, so you cannot do that। so ऊपर से you have to put that sapling, and वो अपने आप कुछ जो है strong, मतलब होता है ना, जो अच्छा है वो फिट हो जाएगा, जो नहीं है वो मर जाता है ऑब्वियसली। तो 10-15 लगा देने का, उसमें 4-5 तो जिंदा होते हैं, ऐसे कर करके वहां पे बढ़ गया है वो फ्लावर। इट वाज वेरी नाइस, गुड एक्सपीरियंस। इवन मैंग्रोव्स यू कैन, इसके लिए विक्टोरिया जाने का जरूरत नहीं है। व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम कल्याण टू डोंबिवली, डोंबिवली के बाद थाने के बीच में देखो पूरा ग्रीन कवर दिखता है, उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया है आई डोंट नो, बट देन तो मेरा रूट दिल्ली का वही था। सो डोंबिवली के बाद में जैसे कोपर, दीवा, मुंब्रा, कलवा, ठाणे, राइट, तो जो बीच का जो स्नैप है ना पूरा वो पीरियड जो है, उसमें एकदम ठंडी हवा आती है, उसमें कंप्लीटली ग्रीन हो जाता है। सो दैट ग्रीन कवर एग्जैक्टली इज नथिंग बट मैंग्रोव्स। वो पहले अपने जिस ट्रैक से हम जाते हैं वहां उसके पहले तक वो पूरे ट्रीज थे, उनको कट करके क्लियर करके ट्रैक्स बनता है, बट फिर भी उसका इफेक्ट यहाँ तक आता है, मतलब इतना कोल्ड एयर वो ये करता है। अंडरस्टैंडिंग? ओके। So मैंने मैंग्रोव्स के बारे में क्या टाइम पास इसके लिए नहीं बताया, बट देन दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। सो उसमें वो पॉइंट आ जाएगा। यस, कैन यू कंटिन्यू? Now artificial environment is affecting natural. Any of the example if you want? Sorry, if you know any of the example. Now artificial is affecting natural. Yes, bolo. Any of the artificial ecosystem that is affecting the natural ones? Huh? Deforestation is not a artificial environment. It's an activity. जो किया जाता है जिसकी वजह से it is affecting the forest. Yes, but then my question is name one artificial environment जिसकी वजह से natural is getting affected या फिर naturally कुछ factors are getting affected. Zoos, can we say exploitation of animals? It's not exploitation actually, but then जो actually उनके habitat में उनका growth जो होता है ना, after the way they can live freely, that is not possible in the zoos. Because overall, if you see, I don't know, you would have visited any of the sanctuary or something, but I have visited Sanjay Gandhi National Park.
SGNP, बोरीवली. So there when we went, तो हमने देखा कि ऐसे हेक्टर्स या फिर बड़े-बड़े लैंड्स इतने एरिया में सिर्फ एक ही लायन घूमता है, वो उसका टेरिटरी है. आई अंडरस्टैंडिंग. तो उसका टेरिटरी, एक दूसरे का अगर दूसरे एरिया में देखेंगे तो वो एक लायन को उसका टेरिटरी है. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली दे नीड दैट, मतलब ब्रीडिंग के लिए बोलो या फिर रिप्रोडक्शन के लिए बोलो या फिर वो, so they actually need so much of land. But then when we put them into the cages, don't you think that is very much like insufficient for them? So in that way we can say that the artificial thing is maybe affecting that. या फिर dam construction बोला था किसी ने. Dam construction is totally affecting all the natural things. Reason क्या रहेगा? For building a dam, you require ample and ample of land. Ample. और अगर उस लैंड पे अभी इतना अगर मैंने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लैंड व्हिच आई वांट, बट फिर यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो मैं इमीडिएटली डिफॉरेस्टेशन पे लग जाऊं या फिर आई विल बर्न द लैंड कंप्लीटली. व्हाट इज द रीजन ऑफ बर्निंग? आई डोंट वांट एनी अदर प्लांट्स ग्रोइंग ओवर देयर, बिकॉज़ वहां पे मुझे डैम सेटअप करना है, या फिर आई हैव टू सेट अप एनी ऑफ द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, सो आई डोंट वांट द प्लांट्स टू बी ग्रो. अंडरस्टैंडिंग? यस. The science that deals with the study of the ecology is for we have studied क्या अकेले के लिए पढ़ रहे हैं? अकेले के लिए पढ़ रहे हैं? Anyways, come here. So abiotic factors and biotic factors, when both of them are coming together, then this is called as ecology. Now you should know that LOGY, this word is used for any of the study. For example, biology, study of living organisms. Cytology, this you have seen in your 7th standard. What is cytology? What is cytology? Logy तो समझा, study है. What is cyto? 8th standard में मैंने किसको पढ़ाया? देखो तो आना चाहिए ना. Cell and cell organelles, chapter number 10. मैम आप जब चैप्टर्स भी बोलते हो ना, तो हम सोचते हैं कभी पढ़ा है. आपको तो पता है, but we need to go back into the flashback and then we can come back over it. Cell and cell organelles, mitochondria and all that, एक एक पढ़ा था. Study of cells is called as cytology. You people have not studied anything in the last. Show करता है. Basic terms like ecology, basic terms like this cytology, environment, artificial, whatever. When this is not told by you, then yes. Anyways, fine. So the next part which we are going to start is about environmental conservation. What is environmental conservation? Anybody who can tell me in short? वही जो हमने starting में discuss किया, environment conservation. So you have to protect the trees and बोल बच्चे तो बहुत लोग करते हैं trees. पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ and all that things. But then just by knowing all those things, do you think that it is coming into action? देखा भी awareness लोगों के पास है. पहले ऐसा था कि people are not even aware about the things. But now our social media as well as you know like news तो है ही, but then news hardly कोई देखता रहेगा. मतलब I have no time to watch the news. So on Google, when you do that, you have ample of news coming over there. तो जो आप of course जो आप टाइप करते हो वही आता है. क्रिकेटर्स के बारे में डालेंगे तो वही आएगा. बकवास डालेंगे तो बकवास ही आएगा वहाँ पे नीचे. Because whatever you do, that becomes a feed in your Google. So if I put about the environment या फिर any of the environment related या फिर economics, मतलब पता है any of the related to economy वाला news रहेगा. So I get to know about that. So in that you come to know that what are the natural calamities which have taken place from last year. रहेगा ना? 2020 जो start हुआ था जनवरी में,
Amazon rainforest, fires था, you know, then the daily rate started. उसके बाद में I think pandemic March में लग गया. मतलब basically everything started becoming worse. And then अभी recently भी कहीं पे तो somewhere recently I have read that again fire has taken place. So many of the times fire can be considered as a natural disaster, and many of the times it can be considered as the artificial also या फिर man-made. But जितना मुझे पता है कि bigger forest में क्या होता है, because of the higher temperature in the summer, and then before the rain you can see mostly it catches fire mostly. So at that time we can say it like yes, that is called as the man-made नहीं बोल सकते, but an artificial disaster. Okay, fine. So okay, environment conservation में भी वहाँ पे देखो दिया है man-made factors or you can say natural factors. So what it can be like any of the natural calamities which you all can name. Yes. Okay, so can floods be considered in both of them? Can floods be considered in both man-made and natural? The one who is saying yes has to answer me also. अभी कोई आंसर नहीं करे. किसकी वजह से? Dams की वजह से. Okay. But then do you want to say that building dams is not proper? Building dams is the right decision, yes. But then how is it affecting? That is what I want to know. Huh? Okay. So what happens because of that? एक जन एक टाइम पे बोलेगा तो बेटर रहेगा. Yes. Yes, so we can say that many of the areas of the villages that get submerged, right? One reason. And I think flood का तो 2005 में हुआ था. 26 July, famous example is about all the blockages in the mostly sewage का जो है. So in all that the plastic blockage के वजह से ज़्यादा हो गया. So what is this plastic blockage? मतलब इसीलिए I think from the pandemic we have started like even at least we follow that thing that we have separation of the waste, dry, wet. Okay, so plastic and even when in our society it is like we have three differentiations, that is three categories: dry, wet, and then dry में भी दो है सब, that is plastic and paper different. So in our place we have three dustbins. One is completely for wet. खरीदने में कुछ लगता नहीं है, धोने में बहुत तकलीफ होती है. Dry is for one is for paper, the waste papers whatever you crumble and you put, that is only for the paper is separate. कुरकुरे वगैरह खाते हो तो उसके लिए प्लास्टिक अलग, बिस्किट एंड कुरकुरे एंड चीज है जो भी उसका obviously everything is your Maggi cover and everything जो तुम लोग नॉर्मली खाते हो, isn't it? तुम लोग का फूड है ना वो सब नहीं. सिंसियर बच्चा, हाँ ओके एक्सेप्ट. Third last bit. So yes, so plastic and all that is segregated differently. So earlier ऐसा नहीं होता था या फिर अभी भी पता नहीं हम लोग के सोसाइटी में से तो segregate होके जाते हैं. आगे जाके क्या होता है nobody knows about it. But we have seen that earlier it was not there, but now we have the separation of that. So yes, maybe that can be one of the reasons for the flood, as well as forest fires can be considered as both. जैसे मैंने अभी जैसे explain किया. Natural as well as man-made. Depending on the condition, it can be either natural या फिर बहुत बार during the fights and also probably they do that letting off of fire in a forest, so that can also be done. That is one about floods. And anything else? Earthquake is a completely natural calamity because obviously कोई किसी को पता नहीं what is going to happen here on the spot, right? So earthquake can be like yes. In I don't know when I was in school, I don't remember exactly, but then school हुई थे
and we had a holiday, so we were at home and कल्याण में थोड़ा सा एक कहीं पे तो हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा एक शिफ्ट बोले ना, एक थोड़ा सा तड़का लग गया था, बहुत रेयरली था। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ ट्रीमर्स, मतलब ये सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक शेक लग गया था, बट देन बहुत ही हल्का था वो, मतलब बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो मैं से खुश नहीं हूँ, बट देन आई एम टेलिंग यू like the thing which you read in the books always कि ये ऐसा है, तो थोड़ा सा आपको वो शेक ऐसे एकदम ऐसे, तो बस ऐसे हो गए थे थोड़ा सा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। लोगों ने उसका कहानी बना दिया बाद में, बाबा बाबा कबड़ गिर गया है, ये हो, कुछ नहीं गिरा था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल शेक इज गिविंग यू नो प्रॉब्लम। ये लैपटॉप भी अगर ऐसे रखा हुआ है तो वो ऐसे होके वापस ऐसे हो जाएगा, नो लाइक ऐसे। बहुत लोग पता नहीं बिल्डिंग में तो इतना डर गए थे, कबड़ हम लोग का गिर गया, मतलब मुझे तो कुछ आवाज नहीं, हम लोग भी तो वहीं पे रहते हैं। People will make stories regarding that, but then yes, that happened and I was sitting like this, so ऐसे हो गए, I still remember it and ऐसा लगा कुछ तो हुआ, but then you feel like you get that thing. I don't know how you will understand, but then when I went through that, एकदम हल्का था। I was in school, बहुत टाइम हो गया रहेगा, 10-12 साल से भी पहले, 13-14 साल हो गया रहेगा, but that time एकदम हल्का, like that छोड़ो, उसके बाद में यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, so good, but then Japan and then those people are very much experienced, because तो बेचारों को दिवाली होली के जैसा इंडिया में फेस्टिवल्स कैसे आता है, अरे ये खत्म, राखी खत्म, गणपति खत्म, ये नवरात्रि, दिवाली, ये वो दन तो वैसा उनको एक आते जाता है वैसे। Okay, so earthquake can be considered as a completely natural disaster, right? Any of the other cyclone को मैं कैसे भूल सकती हूँ? निसर्ग साइक्लोन लास्ट ईयर पेंडेमिक का स्टार्टिंग में, रिमेम्बर निसर्ग नाम था, और इस बार जो आया था वो कुछ तो अलग अजीब ही नाम है उसका, टी 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 से कुछ तो था, टाइफून नाम है उसका। टाइफून इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, कुछ तो है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, बट देन एकदम हल्का अपने यहाँ पे देखो रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 days एंड हवा तो इतना ऐसा लगा उड़ के सब यहाँ से वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सबका, बट देन लास्ट ईयर भी वैसे ही था एंड वन ऑफ माय कजिन्स ही वाज लाइक चलो अपन ऊपर जाते हैं, इस पे फोटो निकालते हैं, मेरा व्हाट people are like running and dying from here and there and he enjoyed that, he made a good vlog and he enjoyed that nisarga cyclone and all, मैं बोला देखा इसका क्या तो इसका क्या, because in Konkan areas and all I think many of the सब छप्पर ऊपर उड़ गए थे उनके, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। So we can say that cyclone can be considered again as a completely natural disaster. Wind currents में क्या difference हो जाएगा, what is going to happen between the land breeze and air breeze and in the ocean breeze, and you don't know what the wind currents are going, uneven wind currents can take place, and because of that, that might be the reason about the cyclones. Tsunami, again natural. Tsunami, I don't think that can be considered as flood, that is completely natural again, because Marine Drive पे याद है हुआ था एक, I don't know what is that age, I mean that year, I don't remember it again, but then tsunami वहाँ पे आके जो Marine Drive देखा है सब लोगों ने, टीवी पे तो देखा रहेगा। तो मरीन ड्राइव के यहाँ पे आगे बिल्डिंग्स है, राइट, बीच में रोड है, क्रॉसिंग रोड है वहाँ पे, एंड देन यू हैव द नेचुरल्स एंड ऑल दैट, पीछे पूरा बिल्डिंग्स है वहाँ पे। तो मुझे इतना बाय हार्ट है बिकॉज़ दैट इज लाइक माय सेकंड होम, व्हेनेवर आई गो एंड विजिट ओवर देयर, सो आई जस्ट रिमेंबर दैट। सो व्हेन यू हैव द so when you have that no like coming over, so पूरी तरीके से at that time I still remember when the waters they splashed out of that ना, मतलब उसी से जब बाहर स्प्लैश हुआ पानी, तो आफ्टर सम टाइम जो भी कचरा हमने उसमें डाला ना वो सब अपने ऊपर फेंक के वापस चला गया। अंडरस्टैंडिंग, जो भी कचरा हम लोग डालते ना डाले, सो आफ्टर सम टाइम जब वो स्प्लैश हुआ पूरा पानी, तो उसके बाद में सब जो हमने उसको दिया था वो रिटर्न गिफ्ट देके चला गया वापस, एंड देन आफ्टर वो फोटो भी बहुत वायरल हो गया था, न्यूज़पेपर में सब आया था, वो ऐसा बड़ा सा एक पेपर फोटो आया था कि एक बोलते ना जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब बहुत कुछ उसमें ये बन रहा था, एक अलग अलग स्लोगन्स डाल रहे थे लोग, what you get, what you do, you get it back and all that, तो उसमें था कि मतलब जो भी कचरा हमने थ्रू आउट में डाला रहेगा, that because of that tsunami it came back to all of us.
So all these are considered as the, you can read about it, tsunami in Mumbai डाल के देखो, you will get about it. कैसा ना, उसके लिए थोड़ा पेपर भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा न्यूज़ देखना पड़ता है, मतलब क्या चल रहा है अपने आजू, एक्सेप्ट कोरोना देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, बट अपना दिमाग वहीं पे अड़ जाता है. सो प्लीज थोड़ा सा हट के और चीजें भी देख, ठीक है. Fine. So here we have completed about the part of. Oh, okay, so here we have completed about the factors affecting the environment. Now there we have still discussed many of the things. So the next part which we are the next part which we are going to see is about the pollution. Pollution तो सबको पता है. Everybody knows क्या है, किसकी वजह से होता है, what are the gases and everything you know. So I don't think so there is any need to tell you about that. So यहाँ पे चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं. पेज नंबर 39 पे देखो. एयर पोल्यूशन का गैसेस दिया हुआ है, ठीक है. वाटर पोल्यूशन में क्या क्या रहेगा कंपोनेंट्स, क्या क्या है जो वाटर पोल्यूशन लीड करता है. So all the fluid, you can see the toxic fluid like mercury and ammonia and all that coming from the factories and getting mixed with your natural bodies. Understanding? तो उसमें mix होके वो उसको pollute कर देगा. Soil pollution, you know, plastic, thermocol, fertilizers, सबसे important है. हाँ? Insecticides also, yes. You have fertilizers, chemical fertilizers which are going to ruin completely. Then sources क्या क्या है air pollution का, तो obviously your industries, factories and vehicles, that is number one. Then water pollution का industrial waste, domestic waste, ठीक है ना, industrial waste, domestic waste, all kinds of waste which you must have 9th में पढ़ा ना इसके बारे में. Biomedical waste, radioactive waste, ये टेबल पढ़ा था पूरा. इससे बोला वो चैप्टर रीड करके आओ तो आगे का समझेगा, ठीक है. Soil pollution में you have the thermal power stations, then soil pollution में mostly biomedical waste ज़्यादा mix होने का chances है. Probably that I will tell you in the next lecture, detail में बताएंगे. Okay, so इफेक्ट देख लेते हैं. So effect of air pollution, skin allergies और ये ऐसे बाल जाना, कुछ साल में ही पता चलना हम तकलीफ होते जा रहे धीरे धीरे. That is a happy realization in life. If you want to really face the pollution, and then you have many of the ads coming out on that. What to do? I don't know. This face and this face and oily and sticky and हाँ वो दोनों कुछ दिखाते हैं ऐसा. I don't know. So they have that इतना pollution क्या होगा and all that stuff. Okay. Again business है और कुछ भी नहीं. इस pollution से वैसे भी हालत खराब होता ही है. कौन सा भी क्रीम पाउडर लगा के जाओ इफेक्ट होने ही वाला. Nothing is going to make you fair and lovely and fit and nothing. Okay. So water pollution, you know the effect of water pollution, the aquatic animals getting affected by that, right? So oil spills होता है. Anybody who can tell me regarding oil spills के बारे में आपको पढ़ना है. एक पूरा चैप्टर नेक्स्ट का है माइक्रोबायोलॉजी में, oil spills के बारे में पढ़ेंगे. फिर भी अभी अगर किसी को पता है तो what do you understand by the word oil spills? Oil spills, oil, tail, spills, गिर गया, simple. So when you have big cartons of oil or like fuel which is getting transported from one place to another, तो बीच-बीच में accidents होते हैं, कभी-कभी करवाए भी दिए जाते हैं जबरदस्ती. ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है. So at that time you can see the oil gets spilled completely on the surface of the water. मस्त एक ऐसा layer बना के वो रह जाता है, ठीक है. And then what happens? The sunlight is not able to penetrate inside that. इसकी वजह से what is happening? Obviously the aquatic animals get affected. Okay. What is the next thing that we will see in the next lecture? Topic boring है, अच्छा है जो भी है. Miss, you are not audible.